નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, now our next questions for the exercise 10.1, the question number 3. Question number 3 is, let B a line and P be a point not on L. Through P, draw a line M parallel to L. Now joint P to any point Q on L. Choose any other point R on M. Through R, draw a line parallel to PQ. Let this meet L at S. What shape do the two sets of parallel line enclosed? Okay students, now our third questions. The third question is, let L be a line and P be a point not on L. So see dear students, I have to already draw a one line. This line is measurement not given, so I have to draw a one line, any measurement, and give the name is L. Second thing is, P is not on line L. I have to take a point P is here. Why? Because P point is not line L. Then after we have to draw the parallel line of the P. Then जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, टेक अ वन पॉइंट, हियर इज Q. Okay, then after joint these 2 points, I have to join these 2 points. Clear? Now open your compass for any radius. So I have to open my compass for any radius. So this is my radius. Clear? Then after Q is my center point and draw arc. Q is my center point and draw arc is here. Now understands? So Q is my center point and draw an arc. Same radius, it means open anyway. Now P as a center and draw an arc. So P as a center, draw an arc. Same way here, P as a center and draw arc, but radius is same. So understand students this two. Okay, now my second thing is means next one is, open your compass for here to here distance. So it means your compass needle is set here and your pencil needle set is here. Okay, this one. Open your compass for this radius. Now place your compass pointer on this point and draw an arc. It means here points to cut. See here, in this point to cut. This way. Right? Now join these 2 points. Join these 2 points. It means join this one. Right? And draw one lines and give this name. In this lines is M. So this one is our first questions. Understands? Now in these questions, take a one more point. Take a one more point on M. I have to take a one more point R on M regarding our questions. And R to draw a parallel line PQ. It means R में से P और Q इसी तरह से हमने parallel line draw करनी. So same things. So first of all, open your compass and this radius, it means open to check this here to here. So this one is our first radius. Yes or no? This one is our first radius. So same things. You have to draw one same arc. See, set your compass on R point and draw a 1/2 circle. S, it means draw a arc. Understand? And same here, distance is your compass pointer set is here and your pencil pointer set on this point, this way. Understand? Open your compass for in this radius. Same for this one is our point. Cut it in this point
right? Then cut here. Then after a draw in this point, these 2 points, it means draw a one line, draw a one line, and give the name is suppose is S, right? So see, understand dear students, this one is the our question number 3 construction. See, line L and line M, these 2 lines are parallel. Line L and line M, these 2 lines are parallel. This one is our question number 1. But in this question, see here, the PQ and RS, these 2 lines also for the parallel line. It means PQ parallel to RS. So this one is our question number 3. So understand students how to construct these types of the figure. Okay? Okay students, now our construction is ready. Now give the name. I have to take already give a name. Here is suppose A, B, D, G, E, F, Y, X, K, J. Okay? Why? Because हमें स्टेप्स लिखना है. स्टेप्स लिखने के लिए इजी रहे इसलिए ड्रॉ any arc and give the name. So I have to already give the name in this construction. So write down the steps of this construction. So first of all dear students, our first step. So our first step is draw a line L and a point P outside L. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की थी और P जो है वो हमने आउटसाइड में लिया था. तो राइट डाउन ड्रॉ अ लाइन L and a point P outside L, right? Then after हमने एक पॉइंट Q टेक किया था. तो राइट डाउन द सेकंड स्टेप, टेक एनी पॉइंट Q on L and join Q to P. एक Q हमने पॉइंट किया था, बाद में हमने इन दोनों को ज्वाइंट किया था. तो राइट डाउन दिस वन. So this one is our second step. Now to our third step. So our third step, with Q as center, any convenient radius, draw an arc cutting L at A एंड बी. उसके बाद हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यू को सेंटर लिया था, बाद में एनी कॉन्वेंट रेडियस, कोई भी कॉन्वेंट रेडियस ली थी और यहां से इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की थी, यस और नो. और जहां दोनों पे इंटरसेक्ट यानी कि कट हुआ वहां पे हमने नेम दिया ए एन बी. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अंडरस्टैंड्स? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप. सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज पी एज सेंटर, same radius, draw an arc EF cutting PQ at D. और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने किया था यहाँ पे P, दिस वन इज आवर सेंटर. हमने सेम ही रेडियस ली थी तो इसे हमें सेंटर रखा था और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की थी कि नहीं. तो P is a center, same radius, draw an arc and give the name E and F. So this one is our fourth step. P is a center, same radius, draw an arc, EF cutting PQ at D. Right? E F arc P and Q cutting at which point? The D point. So this one is our fourth step. So understands? Now to our next step is the step 4. So dear students, our step 5 is take A to B as radius, D as center, draw an arc, cut at C. So उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, एक पॉइंट ए टू बी जितनी रेडियस ली थी, डी को हमने सेंटर लिया था और इस तरह से एक
आर्क ड्रॉ की थी और जहां पे कट होता वहां पे हमने क्या किया था, जे नेम दिया था, राइट. सी दिस फिगर्स. क्लियर? ओके. नाउ टू द नेक्स्ट स्टेप. Now join GP and draw a line M. अब उसके बाद हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, G और P इन दोनों को हमने ज्वाइंट किया था, G और P को ज्वाइंट किया था और एक लाइन ड्रॉ की थी. कौन सी लाइन? लाइन M, राइट. नेक्स्ट स्टेप, टेक पॉइंट R ऑन लाइन M. उसके बाद हमने इस M लाइन पे कोई एक पॉइंट लिया था, कौन सा? R. राइट डाउन द स्टेप्स. नेक्स्ट स्टेप, R एज सेंटर एंड Q to B distance. Q to B distance. This one is our radius. Draw an arc. Draw an arc. Cut at J and K. Cut at J and K. राइट. उसके बाद हमने क्या किया था, आर्क को सेंटर लिया था, राइट. A टू Q टू B जितनी जितनी आर्क हमने ओपन की थी उतनी आर्क ओपन करके हमने एक आर्क ड्रॉ की थी और जहां पे कट हुआ वहां पे हमने नेम दिया J और K, राइट. नेक्स्ट स्टेप, X as center, A to B radius, distance A to B radius, draw an arc, cut at Y. बाद में हमने क्या किया था, X को सेंटर लिया था, जो हमने लाइन पे X लिखा हुआ देखो वहां पे, दिस वन इज अवर सेंटर. A to B, दिस वन इज अवर रेडियस. हमने A से B जितना डिस्टेंस वाले रेडियस ओपन किया था और एक आर्क ड्रॉ की थी और जहां पे कट हुआ वहां पे हमने एक पॉइंट लिया गया, कौन सा पॉइंट? Y पॉइंट. अंडरस्टैंड दिस. लास्ट स्टेप, अ जॉइंट RY मीट L एट S. बाद में हमने क्या किया, RY को ज्वाइंट किया, RY को ज्वाइंट किया और L को जहां पे वो मीट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे हमने क्या नाम दिया? X. So this one is our step. So understand students. Now to the in this construction, in the last lines is what shape do the two sets of parallel line including. It means आप इस फिगर्स को देखो, see this figure, तो आपको कौन सा शेप्स दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स? जितना मैंने बोल्ड किया गया है, जो बोल्ड है उतना ही पोर्शन देखो, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, yes or no? And this quadrilateral is the which type of quadrilateral? So this one is the parallel quadrilateral. It means this shape is parallel shapes. So understand students, so this one is the our exercise 10.1 and question number 3. Thank you for joining us.